Hello guys, today we are going to learn a very important topic from where in your NEET examination every year one question so minimum came, okay, and most of the students, most means I can talk about almost 90% of the students have a complete misconception about particular this topic, which is called the solubility of the ionic solids, where we will talk about the hydration and the lattice energy. और क्या होता है from where this examples comes during the exam and they have a tendency to write answer the wrong one. तो आज हम देखेंगे वही टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में और इफेक्टिव वे में एक्चुअली वो होता क्या है, ओके, एंड हाउ डज एन आयनिक सॉलिड्स गेट सॉल्युबलाइज इन एक्वस मीडियम, ओके। और यहाँ से हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे और वो एमसीक्यूज हम देखेंगे कैसे होता है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी the topic is solubility of the ionic solids, okay. Now हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे the concept of lattice energy और the concept of hydration energy यहाँ पे, okay. Now coming to the discussion, now see what is lattice energy. Let's say you have an ionic solid, okay, and that ionic solid contains what? A cation definitely and an anion, okay. Now see, in this cation and anion they will form a electrostatic interaction between them, and in this electrostatic interaction what will happen, if you apply the some amount of energy, this electrostatic attraction is going to break, right? So that electrostatic energy is in order to break, the energy which you have to provide to remove the cation from the anion, means to separate them, that energy is called the our lattice energy. So what we can say, in order to summarize, what we can say that the amount of energy which is required, okay, it is required matlab, let's say it's a bond, electrostatic bond connected a cation and anion, and we are providing the energy in order to break this bond, okay. Now to separate 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous component, gaseous ions. Now why gaseous? Because we know that in gaseous state there is the in between the ions or between any particles there will be very less amount of attractive force, and it is very easy to separate them into the gaseous state. Now see here what is happening. Here we have a particular ionic solid where there is a cation and where is an anion, and they are strongly held by the electrostatic attraction force. We are providing here with some amount of energy, that is your delta H1, which is nothing but our lattice energy. Now in some places what you will find that the lattice energy is given as when energy is released in order to when 1 mole of a gaseous cation and gaseous anion they form together, come together and form the compound. That is exactly same, there is no difference there. But the thing is that for breaking the breaking the lattice, we have to give the energy, and to making that it will be the releasing the energy. So it is exactly same, that means the value in this case the lattice energy is defined by your U, that is the positive one. When a positive means we have to give, and when it is released it will be nothing but as a negative, okay. So positive delta H1, that is we have to give energy, and for the opposite one what is happened, that is negative delta H1, that is the formation energy, right? So this is what is the concept of lattice energy. So in summary, you have a ionic molecule, ionic bond, you are giving amount of energy in order to break that one. Now next, generally what happens, your ionic compounds are soluble in your polar mediums. Especially we know one polar medium comes in very handy, that is your water, okay. So let's look at now first this lattice energy. Before going to that topic, let's see one thing, that how this lattice energy is determined. Now let me tell you all, there is no effective and foolproof method has been discovered yet or experimentally found that to determine the lattice energy in exactly, okay. So that is why what we will take the help of the bond Haber cycle. We will take the help of the
Bond-Haber cycle. Now, in this particular Bond-Haber cycle, one thing is very important, which is that it actually determines the lattice energy for of the lattice from its primordial state, that is the एकदम initial state. Okay, क्या होता है? Let's see if I talk about the formation of the lithium fluoride. Okay, lithium fluoride, and we know that in normally the lithium is exist as lithium solid, and fluorine is exist as difluoride gas. Now, if I write the complete reaction of the lithium fluoride formation, that is lithium solid plus half of F2 gaseous, that is give me LiF solid. So this is basically the exact reaction, and for this reaction, that is my delta HF, that is the lattice formation energy. Delta HF, that is the lattice formation energy. Now, पहले स्टेप में क्या होगा? In first step, what we will going to do? अच्छा, anyways, what is our objective? Our objective is to make the ions in its gaseous form, right? So this is our objective, to form the lithium as a gaseous form and the fluorine as the F minus as the gaseous form. Now see, F minus, F already is a gas, but lithium is a solid. Now how will we convert a solid to the gas? So the first step will be the conversion of a solid to the gas, and that step beta is called your enthalpy of sublimation. That means in this what we will do, we will sublime the lithium from solid state to the gaseous state to form the Li gaseous. You can see here, right? So Li solid, from here it is converted into Li gaseous. देख लो एक बार यहाँ से बेटा, solid to gaseous. Now what is happening? Now once this is in gaseous, still we are not done yet. Why? Because what we need the ion. We need the ionic state, right? So lithium gaseous, we have to convert into the lithium ion, and in order to do that, what we have to do? We have to use enthalpy of ionization process. That means we have to ionize. Okay, you know ionization energy, which is a simple textbook problem. You can check the periodic properties chapter. Now see, once it is ionized, we are ready with our Li plus ion. Okay, but we are not still ready with the F minus. Now see what happens here. In case of F minus, what happens? The fluorine, as we know that it is already in the gaseous state, so we are not changing its state, right? But the problem is that fluorine is in F2, that is 2 F are connected together. So in order to break that covalent bond, what we have to do? We have to give a we have to put a dissociation energy, right? Now in this dissociation energy, we have to use the FF bond enthalpy. We have to incorporate in order to break this FF bond, and what we are converting into, and it will be converting into your so it will be converting into your F gaseous, which is in atomic state, right? Which is in atomic state. So what we did, we just basically broke an FF bond. So now still what we have in the medium, we have Li plus and we have fluorine in the gaseous state, which is in the atomic form. Now what we have to do, we have to give an electron to F. So उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए we have to use this electron affinity, that is in the gaseous state, and fluorine atom will take away one electron to form its anionic counterpart, right? So now we are ready with our lithium gaseous and lithium plus gaseous and your F minus gaseous. हम लोग ready है यहाँ पे, और then क्या होगा? Now since the gaseous atoms are already ready, so we will directly convert into the lithium fluoride lattice enthalpy. That is, here we have to incorporate, as I said also earlier, we have to incorporate a lattice enthalpy in order to make the bonds, right? And if you want to break the bond, you have to give that amount of energy. Now if you see here, यहाँ पे it's a complete application of a something called the Hess law. और यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर Hess law use करके हम लिख सकते हैं that delta HF of the reaction of this whole complete reaction, that is the formation of Li solid to F to the lithium fluoride solid, हम यहाँ से लिख सकते हैं delta HF is equal to your delta H sublimation of the first step. उसके बाद क्या है? उसके बाद है मेरा
आयनाइजेशन, बेटा उसके बाद क्या है, एंथैल्पी दैट इज डिसोसिएशन, ओके, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस डेल्टा एच लैटिस, ओके, और टोटल सम होगा इसका। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द हेस लॉ, जिसको हम यूज करके हमने बॉन्ड हेबर साइकिल कंस्ट्रक्ट किया और वहां से व्हाट वी डिड, वी डिटरमाइन दिस लैटिस एनर्जी, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ मेथड ऑफ लैटिस। नाउ हम फिर वो प्रॉब्लम में आते हैं जहां पे वी आर ट्राइंग टू सॉल्युबलाइज एन आयनिक कंपाउंड इनटू अ वाटर। नाउ वाटर इज नॉट अलोन, वाटर हैज ऑक्सीजन, वाटर हैज हाइड्रोजन, तो वहां पे देयर विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। देखते हैं क्या होता है। नाउ सी, whenever you try to solubilize something, let's say some compound in water, what happens, water is a polar medium and he is a particularly alone one, okay, so it actually tries to find the high positive or high negative any counterpart in order to get associated, okay. So in order to get associated, that means you can think in this way that the ions or whatever molecules are there in that in water, and let's say this is your water molecule. Now when they come closer, basically they are forming a bond. Maybe it's not a direct bond, but that is also one kind of a electrostatic bond. और स्पेशली जिन लोगों ने गैसियस स्टेट पढ़ा है वहां पे भी लिखा है इट्स कॉल्ड आयन डाइपोल बॉन्ड, राइट। नाउ व्हेन दिस आयन डाइपोल बॉन्ड इज फॉर्म, द एनर्जी विल बी released, right? So here that is basically we are terming at the point, it's called the hydration enthalpy. What is hydration enthalpy? It is the energy released when 1 mole of a gaseous ion is dissolved into sufficient amount of water to an infinitely dilute solution. मतलब क्या होगा, let's say there are ions in the solution जो खुला पड़ा है, मतलब we gave lattice energy, सब कुछ तोड़ दिया, now they are roaming around like that. Now what will happen once they are completely पानी में जो आता है, so this n water molecules what they will try to do, they will try to solubilize them. मतलब क्या होगा, let's say there is a plus charges here or let's say there is a negative charges here. Now water molecules like this, they will try to solubilize by oxygen. The positive charge will get try to solubilize with the oxygen, and what about negative charge? Negative charge will be try to solubilize with the hydrogen atom, as your hydrogen is more electropositive than oxygen. Like this, they will try to solubilize, okay. Now if I take an example, I can give an example here. अगर हम सोडियम क्लोराइड के बारे में सोचे, सोडियम क्लोराइड के बारे में सोचे, सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में होता है, व्हेन इट ट्राइज टू बी सॉल्युबलाइज इन वाटर मीडियम, दिस सोडियम प्लस ओके, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को साथ में लेके सॉल्युबलाइज होता है, और सिमिलरली एक Cl माइनस भी 6 वाटर मॉलिक्यूल को साथ में लेके solubilize होता है, okay. Now in order to do that, what will happen, the energy will be released, right, and that energy is nothing but is called the hydration energy. Now एक क्वेश्चन आता है, now this hydration energy और lattice energy ये दोनों क्या रिलेटेड है, एक समरी करके देख लेते हैं. See, if this is the energy order, this is the energy direction, और यहाँ पे क्या है बेटा, देखो पहले एक आयनिक लैटिस था, now we gave the lattice enthalpy, okay, we give the lattice enthalpy, और वो फॉर्म हुआ gaseous ion में. Now this gaseous ion what will happen, they will come in presence of water, यहाँ पे पानी ऐड हुआ है, water, in presence of water, what will happen, they will release amount of energy, that is called the hydration enthalpy. Now see, अगर हम दोनों को एक साथ करें, अगर एक साथ करें तो क्या होगा, यहां से अगर यहां तक हम जाए, मतलब आयनिक लैटिस से अगर डायरेक्टली इफ आई गो टू द your hydrated ions, this is basically what will be this energy required for this particular process is will be calling you the solvation energy.
दिस विल बी कॉलिंग यू द सॉल्वेशन एनर्जी। इसके बारे में हम बाद में कोई एक क्लास में बात करेंगे, फिलहाल ये हमारे टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, तो हम ये बाद में बात करेंगे। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है, जैसे साइज होता है, एंड यू नो दैट द आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो डिपेंड्स, लाइक फजान्स रूल इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो बहुत सारे ऐसे करके होता है। ओके, सो वी विल कीप दैट फॉर अ सेपरेट डिस्कशन क्लास। नाउ यहाँ पे देखो, इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, एंड सो हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी रिलीज होता है, और उसके बाद द मॉलिक्यूल्स गेट hydrated. Okay, so definitely there will be a connection. Now एक connection हम ऐसे establish कर सकते हैं कि अगर if let's say one lattice, if it try to dissolve in water, so it will want to break the ions first, right? So उसके लिए we have to provide that energy. So अगर ये होता है कि if we can supply that, if he can get that energy, lattice energy from the system itself, एक ग्राफ दिखाता हूं, देखो ये वाला ग्राफ अगर देखिए हम यहां से, दिस इज समथिंग इज कॉल्ड द समथिंग द लैटिस एनर्जी, जो मेरे पास एक mx क्रिस्टल है। ओके, नाउ यू हैव टू गिव दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गो टू दिस m प्लस एंड x माइनस स्टेट, करेक्ट। और यहां से क्या होगा, वी हैव टू in presence of water, once it is coordinated with water, it will release the some amount of energy, that is called the hydration energy. So m plus hydrated and x plus hydrated. Now देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का इतना बड़ा रेंज है, ओके, सपोज ये एनर्जी कितना होगा, सपोज ये अगर एनर्जी मेरा 100 जूल है, सपोज ये वाला 100 जूल है, सो ये वाला कितना होगा, ये वाला लेट्स से योर प्लस 70 जूल, सपोज ये 70 जूल है, नो, ओके। नाउ और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, नाउ 70 जूल जो हाइड्रेशन से रिलीज हो रहा है, सॉरी 100 जूल जो हाइड्रेशन से रिलीज हो रहा है, नाउ उसके अंदर सिर्फ 70 जूल द मॉलिक्यूल इज नीडेड, ओनली द मॉलिक्यूल इज नीडेड इन ऑर्डर टू ब्रेक। सो यही मैं बात कर रहा था कि अगर सिस्टम से द मॉलिक्यूल कैन गेट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसकी लैटिस ब्रेक करने में काम आ जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, then this mx crystal will be easily soluble in water. क्योंकि I'm telling again once again, if it solubilizes in water, it will release 100 joule energy, और उसको लैटिस ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए, 70. So वो that it can easily take from the water, right? It can easily take from the solution. Okay, so that is why in this particular process the solvation is favorable. So I will write here, it is a favorable solvation. It is a favorable solvation. मतलब यहाँ पे ये मेरा जो mx क्रिस्टल है, it is can be solvated into water. बट अगर ये वाला केस देखते हैं, यहाँ पे अगर ये मेरा 100 जूल एनर्जी है और लेट्स से ये मेरा 70 जूल एनर्जी है, सॉरी 70 जूल एनर्जी है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब सिर्फ 70 जूल, ओके, लेकिन ये लैटिस ब्रेक करने के लिए हमें कितना चाहिए, 100 जूल एनर्जी चाहिए। सो बाकी 30 वो कहाँ से लाएगा, बाकी 30 what we can do, we can supply from outside. That is why we sometimes, in order to solubilize some solids, we have to heat, and that heat is nothing but basically this additional 30 joule energy. ओके, मतलब नॉर्मली क्या होगा, अगर कोई हम हीट अप्लाई ना करें, नॉर्मली दिस विल बी इनसॉल्युबल, नॉर्मली इट विल बी इनसॉल्युबल, okay, normally it will be insoluble, so there will be no solvation, right? So what is the criteria, the criteria hoga in, I am writing in terms of magnitude, in terms of magnitude, if I write the criteria, your hydration energy, okay, your hydration energy should be greater than your lattice energy. This is the solvation criteria. एक बार मैं फिर से यहाँ से क्लियरली लिख देता हूँ, सेकेंड, द क्राइटेरिया क्या होगा मेरा, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द लैटिस एनर्जी, ये है मेरा
सॉल्वेशन क्राइटेरिया. सॉल्वेशन criteria in terms of magnitude. I am telling again बार बार in terms of magnitude. okay, साइन में नहीं है, मैग्नीट्यूड वैल्यू वाला. ओके चलो मॉड्यूलस दे देता हूँ. नाउ दिस इज फाइन. ओके नाउ दिस इज फाइन. ओके सो एक एमसीक्यू देखते हैं क्या होता है. चलो लास्ट. So molecule of anhydrous magnesium chloride, definitely magnesium chloride पानी water soluble, right? So it liberates 25 calorie per mole of heat. Okay, मतलब जब वो soluble होता है टोटल एनर्जी वो कितना देता है? टोटल एनर्जी देता है 25 कैलोरी पर मोल ऑफ हीट. ओके मतलब ये डेल्टा H dissolving energy is your 25 calorie per mole. Okay. Now what about hydration energy? Hydration energy अच्छा ये liberates मतलब ये -25 होगा, करेक्ट. और हाइड्रेशन एनर्जी कितना बोल दिया है ये लोगों का? हाइड्रेशन एनर्जी इज गिवन योर -30 कैलोरी पर मोल. नाउ देखो द क्वेश्चन इज गिवन, द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर कि व्हाट इज द हीट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. मतलब जब वो डिसॉल्व होता है, मतलब जो आयनिक स्टेट होता है, आयनिक स्टेट से जब वो डिसॉल्व स्टेट में जाता है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट? सिंपल, कुछ नहीं, वी हैव टू जस्ट हियर क्या होगा? डेल्टा एच डी माइनस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन which is equal to -25 minus -30, that is +5 calorie per mole. That means what? +5 कैलोरी पर मोल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसे सिर्फ 5 कैलोरी एनर्जी चाहिए उसके बॉन्ड ब्रेक करके सॉल्युबल होने के लिए, एंड दैट 5 कैलोरी इट कैन इजीली एक्सेस फ्रॉम द एनवायरमेंट. It can easily access from the environment. That is why your magnesium chloride is one of the salt that can be easily soluble in water. Okay, समझ में आया? So when you calculate the dissolution energy, you have to calculate this your dissolve energy minus your hydration energy. Next problem एक और देखते हैं. Which of the following compounds had higher hydration energy than lattice energy? Higher lattice energy, higher hydration energy मतलब what I said, the condition for the higher hydration energy, higher hydration energy than lattice energy, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the molecule is more soluble. So you have to find out that इन चारों में कौन सा वाला मेरा मॉलिक्यूल वाटर में ज्यादा soluble है. So हम फजान रूल में जाते हैं. So if you see here, if I write the ions here, magnesium 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+ और बेरियम 2+, राइट. नाउ अगर हम ऊपर से नीचे में जाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल क्या होगा? द आयनिक साइज इंक्रीजेस. तो अगर साइज इंक्रीज होता है तो व्हाट विल हैपन? इफ योर साइज इंक्रीजेस, सो क्या होगा मेरा बेटा? मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा. तो इफ माय कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑब्वियसली माय ionic character decreases, or if my ionic character decreases, it will becomes less soluble in water. right? तो less soluble in water. So यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरा? यहाँ पे मेरा आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट. आंसर होगा मैग्नीशियम. अच्छा ओके. एंड द लास्ट वन अगर देखते हैं तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी? नाउ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम ये कोई ट्रिकी चीज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. इट्स साइज के ऊपर सब कुछ है. ओके सो अगर हम यहाँ पे देखें दैट बिटवीन सोडियम सल्फाइड और जिंक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे अगर देखें हम सोडियम सल्फाइड इज मच मोर सॉल्युबल इन वाटर. सोडियम सल्फाइड इज मच मोर सॉल्युबल इन वाटर, राइट. सो सोडियम सल्फाइड पहले होगा क्योंकि सोडियम का साइज सबसे छोटा है. सोडियम सल्फाइड इज मच मोर सॉल्युबल इन वाटर. उसके बाद कॉम्पिटिशन आएगा between your जिंक सल्फाइड एंड योर कॉपर सल्फाइड. तो अगर हम देखें यहाँ पे जिंक और कॉपर के बीच
कॉपर का साइज लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए तो कॉपर का साइज क्या होगा, कॉपर का साइज जिंक के साइज से बड़ा है, राइट. सो कॉपर सल्फाइड विल हैव हायर कोवेलेंट कैरेक्टर compared to the zinc sulfide. So if I see now the order, then copper sulfide will be less soluble in water, and that is obvious. That हम बात करेंगे qualitative analysis में, जहाँ पे हम कॉपर को देखेंगे, हम सल्फाइड के when we take copper as a sulfide and we are extracting the copper. Okay, now here then zinc sulfide will be more soluble than copper sulfide in water. So perfect answer क्या, sodium sulfide is greater than zinc sulfide is greater than copper sulfide. So यहाँ पे मेरा आंसर होगा आंसर नंबर 4. Okay, so this was a little bit of complete discussion about the hydration energy and lattice energy. So what is the end of the day summary? So if you ask me, the summary will be that if your hydration energy is larger, then your lattice energy is smaller compared to the hydration energy, the molecule will be solubilized. So ये सब डेटा तुम लोग ध्यान से देखना, और ये डेटा को ध्यान में रखते हुए जब तुम लोग एमसीक्यू करोगे तो ये चीज के साथ यू डेफिनेटली शुड कंपेयर द फजन्स रूल. सो इन दोनों को एक साथ करके तभी कोई एमसीक्यू को टारगेट करना. ओके, सो फाइन, होप यू लाइक दिस. और हम बहुत सारे आएंगे जो तुम्हारे डाउट्स वगैरह डिफरेंट कंप्लीटली कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन जरूर करेंगे, ऐसे छोटे छोटे, विच इज द कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशंस. ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट, डोंट फॉरगेट टू राइट ऑन द comment section. Make sure that you have liked and subscribe our channel, and thank you for joining. Okay, see you in the next time.